Good evening, everyone. So let's get started today. I will be working today after the operation for the first time in today's class, and the topic will be something unusual. So, on all the possible expansion-based, series-based questions which comes from arithmetic series to algebraic series, and which is a subsectional questions which is part of a lot of things that I will be doing. Okay, so while the class is live, you can text me anything at 90623 and 95123 number. Okay, let's get started. So series, all types. It's a very unusual session I'm going to take today, which is an assimilative class with respect to the different kind of stuff all piled up together. Again. And be responsive. Try to give the answer no matter what, whether it's correct or not. Your responses is all that matters at the end. Okay, so we are talking about the different kind of series today. तो ये सीरीज का क्वेश्चन किस तरीके से मिक्स एंड मैच होके आता है, यही आज का क्लास का मोटो है एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट आउट. तो देखिए, एक सीरीज आप लोगों को पता है, दैट इज 1 + 2 3 डॉट 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 n. देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस सीरीज. ये सबने देखा. दिस इज द लास्ट into last plus 1 by 2. That's a summational formation. And into n plus 1 by 2, there is no problem. Okay. And even we know this 1 square, 2 square, dot, 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 n square. Even if it is a q, it is known to us. The thing started getting weird when we enhance the power. 2 to the power 4, dot, 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 this. Or 1 to the power 5, 2 to the power 5, dot, 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 this. So this is one thing we will be trying to focus. Okay, at the end. Next is this. Why this kind of series is not only useful for summation only, but for other cases also. Okay. So for if I give you that any kind of a series, okay, any kind of a structural pattern or this thing. For example, if I tell you about E, I'll just tell you about the E. So 1 plus, so we know this is 2.718 approximated value. Okay. But it's not the case every time. And remember that at the end of the class today, I will share with you a very unusual, some geometry related things. Okay. In the middle, I will send it to you. Yeah. Geometry PDF. It's actually not a PDF. Maybe tomorrow I will send it to you all. ठीक है, तो ये सीरीज को हम लोग कैसे लिखेंगे? So
तो दिस फैक्टोरियल पैटर्न लेके आता है हमारे पास 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल ऐसे ही जाता है एंड डॉट 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 इंफिनिटी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. सो दिस इज द 2 और ये बाकी सब ऐड करके आ रहा है 0.718. नॉट वेरी इजी टू डू इट इन अ सीरीज बेस्ड एडिशन. देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इन बीन एडेड टू दिस. ठीक है, इस सीरीज को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. नाउ लिमिट आल्सो कम्स इन 1/1 plus n whole to the power n. Okay, with respect to some of the previous years of question which has come into ISIs and also CMI, so I've made a small list which I will be doing today as well. ठीक है, तो कभी हम लोगों ने सोचा नहीं कि इस सारे चीजों को हम लोग एक साथ कैसे ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस ई लाइज बिटवीन एक्चुअली 2 to 3, लेकिन अगर हम लोग ओरिएंटेशन लिमिट के हिसाब से कहेंगे सो ई इज मच मोर टुवर्ड्स 3 एंड रिलेटिवली लेस टुवर्ड्स E के साथ 3 का ज्यादा दोस्ती है. We can know that 2.718. That shows us the story in a relatively easier way. So now, तो अगर किसी के बीच में भी रहा, if something is between the two, then also orientation may be a little bit different. Okay. तो ये orientation के ऊपर से बहुत सारी चीजें आते हैं हम लोग के पास. Okay, these proofs won't coming. Don't worry regarding that. Okay. One of you have asked me that what happens if e to the power x comes in. So there is no different formula for that. So this is only summation of this is x to the power n and this is n factorial. That's it. And this starts from 0 to infinity. That's why x1 by x0 by 0 that is 1, x0 by 0 that is 1, and that is x to the power 1 by 1 that is 1. So if this is only 1, so 1 to the power 0 by 0 factorial, 1 to the power 1 by 1 factorial, then the other part comes in. Okay. So you can understand how the first two things comes in. So irrespective of anything, this is the series which we are going to follow. Okay. Now, not every series will be like this. There will be another different kind of series of the exponential and logarithmic both. जैसे एक दो सीरीज आप लोगों को पहले से ही पता है and एक दो सीरीज शायद नहीं पता. For example, we know that the a to the power x1. So 1 plus x log a plus x square by 2, but there is a factorial and log a square. This is the thing. So it's now at this level, series is not restricted to this. जिन लोग नए हैं वो इसे समेशन की तरह से कैसे लिखेंगे, x to the power n by n factorial log a whole to the power n. ठीक है, n equal to 0 to infinity. Yeah, always way. You don't need to write at this level, don't worry. Yeah. So here, now the thing is that in a little bit advanced level, if I can change the summational structure also. अगर मान लो मैं इसी summation में लिख देता हूँ n 0 की जगह पर 1 से हो रहा है, but I still want to get the first value. So then I have to change this value to n minus 1. Okay. So if this summational format starts from this thing, so everything goes one step backward. Okay. So this is n minus 1. So this is the summational shifting we call. This is the interview level kind of an idea which you have. Okay. So ये real life में क्यों होता है? Why would you need this n minus thing in real life? ऐसा करने का क्या जरूरत है? जैसे मान लीजिए मैंने एक डिजाइन किया है, ठीक है, और इस डिजाइन इज मेड फॉर दिस नंबर ऑफ पीपल. ओके, मान लो, चलो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ. मैं मूवीज देखता हूँ, सो इवन माय मूवीज आल्सो हैज अ लिस्ट. ठीक है, तो मैं अपने मूवीज लिस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ. तो देखते हैं जो मैं कुछ मूवीज आने वाले दिनों में देखने वाला हूँ. And here it is. So it's a very much realistic series based analysis which I'm going to share. ठीक है, आमतौर पे सर लोग सिर्फ बोल के छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, मैं बताता भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ. तो देखिए, ये मैं आप लोगों के लिए एक मूवी का लिस्ट लेके आया हूँ. ये मूवीज मैं देखने वाला हूँ आने वाले दिनों में.
ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें बहुत सारा मैथ्स छुपा हुआ है। ऐसे आप लोग देखने लायक मूवी भी इसमें, अगर आप लोग पूछोगे, पहले इंटरेस्टिंग बातें कर लेते हैं। इसमें देखने लायक मूवी, स्टूडेंट के देखने लायक मूवी में से ये बहुत अच्छा है, एंड यू कैन सी दिस वन, एंड यू कैन मैक्सिमम, ये आप लोग को अच्छा लग सकता है। बाकी आप लोगों के लेवल का कुछ है नहीं, मतलब लेवल का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ आपको बहुत टफ है, हार्ड है, बट यू वोंट लाइक इट। दिस इज अ लेटेस्ट मूवी बाय आमिर खान के प्रोडक्शन का है। So this is अभी तक हॉल में ही चल रहा है, so this you won't get, but other movies you will get it well. This is a very good detective novel, and 800 is on Muthaiya Muralidharan's story. How as a Tamil person he got into, he is the first Tamilian to play for Sri Lanka, and when a lot of bad things were happening in Sri Lanka. So Sri Lanka में हमेशा से ही झमेला चलता है, और अभी तो हम श्रीलंका में ज्यादा कुछ सुनते भी नहीं। Not by Not present, Jay of the Jackal and Dirty Dozen, the French Connection are like very old क्लासिक मूवीज। तो मान लो इस सीरीज में आप लोगों को कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है? एनीवन एनीवन सी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस सीरीज? Sir, number 5 and number 8 are not there. बिल्कुल सही। अब 5 नंबर में एक मूवी था जो मैंने देख लिया, ठीक है, और 8 नंबर में भी कोई एक मूवी था जो मैंने देख लिया, इसीलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। अभी मेरे पास असल में देखने लायक मूवीज है 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही मूवीज है। तो अगर ये रैंकिंग को मुझे फिर से री रैंक करना हुआ, सो हाउ वुड आई री रैंक? इसको पूछते हैं, आई कैन गो फॉर 5, 6, 7, 8, 9। But the thing is that this kind of advanced level series based shifting is useful when you have a number from 1 to 2 to 3 to maybe 1 10 to the power 7, this much big number. Getting the logic? So here if I skip around 2, 7, 94, only 3 digits if I just skip, so then also this other 10 to the power 7 minus 3 positions has to be relocated. That is impossible. Okay, so in this kind of bigger analytical framework, अब तुम बोलते हो सर फिर नंबर मत दीजिए, ऐसे लिखिए नॉर्मली, ठीक है, 1, 2, 3, 4 देने का जरूरत नहीं है। फिर हाउ व्हेन आई मार्क इट, मैं हमेशा तो पूरा नाम बोल नहीं पाऊंगा, मैं बोलूंगा 3 नंबर और 7 नंबर मूवी फटाफट दो। सो दिस थिंग फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स अभी आप लोग जानते हैं कि सिर्फ एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन नेटफ्लिक्स पहले डीवीडी बेचता था, डीवीडी भाड़ा देने का सिस्टम था इन लोग। तो आप नेटफ्लिक्स में, इंडिया में कभी इन लोगों ने बिजनेस किया ही नहीं, और जब इंडिया में बिजनेस स्टार्ट किया तब तक हम लोग के पास डीवीडी आ ही चुका था। तो हम लोग तो नेटफ्लिक्स से ओरिजिनल डीवीडी के लिए कभी रुके नहीं। तो व्हेन वी आर वेरी यंग, लाइक इन द फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, और मे बी लाइक क्लास 7, 8 से ही मूवी देख रहे हैं, तो वो सब में वक्त ये सब नहीं था। So Netflix has this kind of summational structure series because they have to mark all these movies into an order where the availability of the movies is dependent. जैसे मान लो रेलवे टिकट, रियल लाइफ में भी ये सीरीज का इस्तेमाल होता है, रेलवे टिकट बुकिंग में भी, एंड विच इज इनकॉर्पोरेटेड थ्रू अ प्रोग्राम कॉल्ड पाइथन। ठीक है, तो ये पाइथन प्रोग्राम में कैसे होता है? तो ध्यान से देखिए, रेलवे टिकट में क्या होता है, आप रेल बुक कर रहे हो, आपके यहाँ से 1-2 टिकट काटते हो, फिर दूसरी जगह से कोई और 2 टिकट काटता है, तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हाउ कैन यू डू दैट? अगर मान लो सिर्फ 4 ही सीट खाली है, मैं यहाँ से ये और ये बुक कर रहा हूँ, आप यहाँ से ये और ये बुक कर रहे हैं, कोई वहां से वो और वो, तो किस तरीके से होगा? सो वंस यू डू इट, इट शोज इट इज ब्लॉक्ड। लेकिन आप मान लो बिना पैसा देके निकल गए, तो ऐसा तो हो ही सकता है, टिकट बुक किया लेकिन पैसा नहीं दिया, आईआरसीटीसी के साइड में जाके बहुत से लोग करते। So there is no solution to that. So then they come with a solution whenever this thing. So for that point of time, ये पूरा series 0 की जगह पर 1 to infinity तक काम करे. And as it is an infinity, if you remove 1 or 2 or any finite item, it doesn't matter. So if I give you a series with respect to 0 to infinity, this is equivalent to 1000 to infinity. याद रखिएगा, इवन दिस इज इक्विवेलेंट टू 10 टू द पावर 99 टू इंफिनिटी। ये बहुत सारे प्रोफेसर लोगों को भी डर लगता है ऐसे बोलने में, क्योंकि दे डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी। इसीलिए वो मैं आप लोगों को अभी कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी सीरीज थोड़ा अलग तरीके से बोलूंगा इन एन इंटरव्यू स्ट्रक्चर। सो इट्स अ इनफाइनाइट स्ट्रक्चर, हाउ इट इज बीन एक्सप्लेन्ड। So it's been a very famous question. I haven't discovered it, but I have read it in a book of mathematics. So recently I have had a book on mathematical tricks based book. 365 different kind of tricks has been done. But इसी से मुझे याद आया एक, तो मान लो एक होटल में there are infinite rooms are there, ठीक है, and there are infinite guests already are sitting in the rooms. One day one extra guest comes in, ठीक है, तो आप उसको कैसे रहने दोगे?
Sir, shift everyone to the next floor. Okay, so the first solution is very easy. So the maybe the first guest will be shifted to room number 2. जो रूम नंबर 2 में था who will be shifted to room number 3. जो 3 में था will be shifted to room number 4. ओके, तो ऐसे ऐसे करते हुए फिर पहला रूम नंबर खाली हो गया and infinity plus 1 is still tends to infinity. There is no problem. समझ में आया? तो हम लोग एक एक रूम को फर्स्ट रूम वाले को सेकंड में, सेकंड रूम वाले को थर्ड में, थर्ड रूम वाले को फोर्थ में ऐसे भेज देंगे. तो एक नया गेस्ट का बंदोबस्त हो गया. अब तुम बोलोगे सर एक की जगह पर अगर 3 आता है तो वही होगा, 1 जाएगा 4 में, 2 जाएगा 5 में, 3 जाएगा 6 में, ठीक है, 4 जाएगा दिस में, तो 1 2 3 में तो कोई रहा नहीं ना. So whatever, any finite value we can reassign like this. So this is the reassigning of an advanced series. But infinite series is not that easy. Then there is level 2 for this series. Level 2 में गेम बदल जाएगा. अब मान लो ऐसा हुआ, infinite people आए हैं तुम्हारे पास, and now you have to assign these infinite people. Sir, shift everyone to the room double of their room number. हाँ क्या करो? Double of the room number. हाँ क्या फिर से? Double of the room number. Double of the room number. Yes, this is also a good ideology. जैसे हम लोग जाएंगे रूम नंबर 1 को रूम नंबर 2 में डालेंगे, रूम नंबर 2 को रूम नंबर 4 में डालेंगे, और रूम नंबर 3 को रूम नंबर 6 में डाल देंगे, 4 को 8 में डाल देंगे, काम खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो इसका मतलब क्या हुआ? सो नाउ ऑल ऑड्स आर फ्री. ऐसा नहीं कि यही एक सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है. So you can also go for either make all the even numbers free or you can make all the odd are free. ठीक है, all even or all odd are free. ये गेम आप थोड़ा सा टफ होगा जब ऐसा आएगा लेवल 3. मान लो इनफाइनाइट बसेस आर देयर, देयर आर इनफाइनाइट बसेस, इनफाइनाइट और एक एक बस में इनफाइनाइट पीपल है, ठीक है. एंड नाउ यू हैव टू असाइन. So this is called multiple infinity concept. Infinity एक सुना था, plus infinity minus infinity सुना था. What is this multiple infinity? क्या होता है? So whenever two separate kind of concepts, but they are mingled up, they come very close to each other. ठीक है? तो इस बार कैसे solution? ये मैं होमवर्क में आप लोगों को देता हूँ, गूगल से भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई There's already a video on this. Sorry? There is already a video on YouTube on this. There is a video on the same problem. Yeah, it's a very famous problem. So what's the solution? Sir, as far as I remember, it was to assign each passenger a ticket number, and then the remaining part I forgot. कोई बात नहीं, ठीक है. सोच, आपने वीडियो देखा है इसीलिए शायद, बट आई रियली एनकरेज यू टू डू इट ऑन योर ओन. ओके, बट इसके लिए ऐसा कॉन्सेप्ट है, बसेस का भी नंबर है 1 2 3. आई डोंट नो व्हिच वीडियो यू हैव सीन, बट शायद सही किया होगा, ठीक है. मुझे वीडियो का लिंक एक बार भेज देना, मैं बता दूंगा, बट यू डोंट सी दैट. ओके, 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी, एंड पीपल आर आल्सो हैविंग ईच बस. बस नंबर 1 में लोगों का नंबर क्या हो? 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है. फिर दूसरे नंबर बस में भी कैसा नंबर होगा? 2 1 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी. देन तीसरा नंबर बस में होगा 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी. इस तरीके से जाएगा और लास्ट में भी एक इंफिनिटी आएगा. ध्यान से देखो, ये एक 1 1 1 1 फॉर्मेशन आपके सामने लाएगा, ठीक है. फिर दूसरा लाएगा एक 2 2 2 2 का फॉर्मेशन, फिर 3 3 3 का फॉर्मेशन, फिर 4 4 4. दिस इज बिकम्स अ लिटिल बिट हार्डर टू अंडरस्टैंड इन द वेरी बिगिनिंग. ओके, कोशिश कीजिए नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व कर. सो दिस इज कॉल्ड अ वेरी मच स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन. ओके, सो as a result of that, after some point of time, there is a matrix formation comes in. Okay, so here the first case, the basic solution or ideology was very easy, that there are infinite numbers. So infinity plus 1 is infinity.
दूसरे बार में दिया कि इनफाइनाइट इवन एंड इनफाइनाइट ऑड, तो ऑलरेडी वी आर इन द मल्टीपल कॉन्सेप्ट। थर्ड वाले में इसी में ही हम लोग को ढूंढना है कि कौन कौन सा प्राइम नंबर्स होंगे। ओके, so here how to find out the primes, because even primes are infinite, so infinite different possible positions are there, because we don't know this is the last prime यहाँ पर होता है, उसके बाद भी एक prime हो ही सकता है। So how that thing is been assigned with respect to this is the level of the infinite structurization. Sir, is it the Yes. Hilbert's paradox of grand total question you are talking about? Sorry. Sir, is it this infinity problem? Is it the Hilbert's paradox of the grand total you are talking about? Yeah, they have actually the hotel paradox, they have given it in a way, but it was actually, he has taken it, Hubler's paradox is actually taken it from a infinite structurization problem. He was first designed it with respect to this kind of beehive structure. Okay. So if there are infinite small subsections into that and infinite number of bees are there and one more bee wants to come in, then how can they assign into that pattern? ओके, बाद में इसी को समझाने के लिए उसे कहते हैं इनफाइनाइट होटेलियर पैराडॉक्स। ओके, बट इट्स नॉट अ कंप्लीट पैराडॉक्स एक्चुअली, because the last solution is a little bit hard, but I solved it in a different way. तुम लोगों ने जो सोल्यूशन शायद वीडियो में ये सभी जगह में दिया रहता है, वही प्राइम का पावर के हिसाब से करके सॉल्व करेगा, बट हियर Yes, sir, it is given in that way only. हाँ, तो वो वैसे करता है। यहाँ पर मैंने देखो एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन किया, ये वो यहाँ पर नहीं देता, ठीक है। Sir, if It's we also look into acceptable. this, sir, if we look into this matrix carefully, will it give me an upper triangular matrix? Yeah, it is. So, and even in that case, for example, 3, 1, 2, so the next one will be 4, 1, 2, 3. So here, see, the pattern continues. I am not writing in exact pattern like that. जैसे मैं 4 के लिए अगर लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 अगर होता है मान लो, so 2, 3, 4, 5, इसमें हो गया 2, 1, 3, 4, 5, फिर हो गया 3, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इस पैटर्न में हम लोग को अभी लेना है ये, फिर इसके साथ हम लोग किसको जोड़ेंगे, दिस इज ओनली लाइक दिस, इज नॉट कमिंग लाइक दैट, तो यहाँ पर मैं ये पैटर्न के साथ नहीं जुड़ रहा है, सो इट इज नॉट दैट इजी टू डायरेक्टली डू इट। तो सिर्फ एक डायगोनल पावर मिल रहा है, अब इस डायगोनल को मैं अलग से रीपोजिशनिंग करूंगा द वे इट गोज इनटू दिस स्ट्रक्चराइजेशन, लेकिन इतना टफ नहीं आएगा, तो उतना भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट में चलता हूँ। Next is in that way E inverse can also be done. Okay, अच्छा, एक स्पेशल फॉर्मेशन e to the power x, e to the power minus x by 2. This is actually 1 plus x square by 2 factorial, x4 by 4 factorial. ये थोड़ा काम का है। ओके, और ये अगर माइनस हो जाएगा, सो दिस इज द ऑड नंबर्स ओनली, ठीक है। सो x plus x cube by 3. Recently ISI is giving a lot of questions on this type, so I decided to do it. Okay, यहाँ पर कॉमन टर्म है 2n, यहाँ पर है 2n प्लस 1, ठीक है। 2n माइनस 1 मत लिख देना, 2n प्लस 1। इसी के ऊपर आधारित एक छोटा सा सवाल यहाँ पर आप लोगों के लिए मान लेते हैं, बहुत ही एक बेसिक सा सवाल देते हैं। तो मान लो 1 by 2 फैक्टोरियल, 1 by 4 फैक्टोरियल, डॉट 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 1 by 6, चलिए डॉट 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 ऐसा है, और 1 plus 1 by 3, 1 by 5, डॉट 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 ऐसा है, तो कैसे होगा? यहाँ से देखो, यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ नहीं है, e square plus 1 by e square minus 1. Yeah, so in the above case it is e plus e to the power minus 1 by 2 minus 1, है नहीं तो कोई बात नहीं, and in the denominator it will be e minus e inverse by 2 only. Okay, so this is the thing, and 2 to the ऐसे ही जाएगा, so e minus 1 का square, and this is e square minus 1. Okay, so lastly e minus 1 एक चला जाएगा, तो e plus 1. Okay, so this value is more than 1 or less than 1, who can say? Less than 1, less than 1. Obviously less than 1, because e is 2.718, so 1.718 by 3.718. Clear? So approximately this thing is very much less than 1.
चलिए बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज e-1। वेरी सिंपल। तो ऐसे छोटे मोटे चीजों का हम लोग काम करते रहेंगे। ये अगर हट जाएगा तो e-2 लिख देंगे। तो बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे एडजस्टमेंट हम लोगों को करने पड़ेंगे आने वाले कुछ सम्स के लिए। अच्छा, इन दिस काइंड ऑफ एडवांस क्लासेस में एक प्रॉब्लम हमेशा ही देखा गया है दैट इफ आई आस्क अ क्वेश्चन एनी वन और टू स्टूडेंट्स आंसर्स एंड बाकी लोगों को लगता है सर आगे बढ़ गए। अगर आपको लगता है मुझे समझ में नहीं आया तो सबके सामने यू कैन हैव टू आस्क मी। और अगर उसमें ही प्रॉब्लम हो रहा है तो व्हाट्सएप कीजिए 9062395123 में कि ये सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ओके, सो दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। हम लोग के वक्त में भी मैंने काफी कबार ऐसे चीजों में देखा है। जैसे मान लो अगर उसका जब सेशन होता था ऑर्गेनिक में मैं बहुत स्ट्रांग था। इनऑर्गेनिक में इक्वेशन का तो कोई ऐसा रूल तो था नहीं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई डिडंट लाइक एट ऑल। ठीक है, फिजिक्स बहुत अच्छा लगता था। केमिस्ट्री तो ऐसे नॉर्मल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री वाज गुड बट एक्सेप्ट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसके क्लास में सर आते थे, कोई एक इक्वेशन लिख देता था, हो जाता था। अब बैलेंस करना इक्वेशन का प्रोसेस तो हम लोगों को पता था, लेकिन ऐसे लिख के किसके साथ कौन सा होगा, कौन के लिए कौन सा इक्वेशन लगे, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था। So as a result of that, it was very hard, and one or two students used to answer, and the rest of us didn't got a chance to do. तो ये प्रॉब्लम होता ही था। इवन बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट होने के बावजूद ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया। ओके सर, आई हैव मैथ्स बोर्ड एग्जाम दैट डे 9 मार्च, कैन यू प्लीज रीशेड्यूल करते? बोर्ड एग्जाम देखते हैं। ठीक है, तो चाहे मैं इंडेक्स बोलूं, चाहे मैं पैराडिज्म दूं, चाहे मैं पैराडॉक्स दूं, इट डजंट मैटर। जस्ट फील फ्री टू टेक्स्ट मी। ये ऑनलाइन क्लास का एक फायदा भी है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Sir, hello, sir. यस, Sir, as you mentioned earlier about texting my problems in the WhatsApp number, I had texted few problems, but I haven't received the प्लीज solutions सेंड of मी, them yet. सेंड मी अगेन। I'll resend it. या Okay, thank you, ना sir. मिले तो ये नीचे चला जाता है ना, तो कभी कभार मुझसे मिस हो सकता है। इट्स वेरी Okay, sir. Okay, sir. I'll resend it. ओके। नेक्स्ट इज द सम ऑफ द सीरीज। Next is the sum of the series. The thing is that, okay, two of you have raised hand regarding the hotel paradox. The concept is infinity and infinity plus one concept. So if you are dealing with a very large number as infinity, so infinity plus infinity is not to infinity. So it is infinity again. This is very much important. But infinity minus infinity, if you have two very large numbers, that is also not zero again. This can be three things. Can be Sir, infinity, this can be zero, or this can be 25, means a finite. Okay, so here, although in the first case we have a predictable answer, here not applicable. So this is not calculable. Quite like log of minus. Okay, so this is the scenario in this case of infinite series based प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। sir, may I ask a question? या थोड़ी देर बाद, ठीक है, एक बार Okay, लिख के sir. भेज दो, मैं एक साथ में जवाब दूंगा। No, sir. It's about that infinity minus infinity that you have asked. या टेल मी। Sir, can it be pi? Because I've read it somewhere infinity minus infinity is also equal to pi. या इट कैन बी फाइन। Yes. Okay.
I said that any finite structuralization you can go for it. Okay. So the kind of Okay. proof which you are saying, it's actually first tried by Ramanujan a long time back, and then Feynman also worked on that. Also, being a physician, he has done this thing. But yeah, so any finite value we can assign it to that. So E is also like that. Even you can put an E to that as well. Okay. Next is sometimes it becomes hard. जैसे मान लो, if I ask you to find the coefficient of x to the power n into, खुद से मेरे पास जो सवाल ISI में आया था वो ये है, the coefficient of e to the power x into x to the power n. लेकिन इसको मैं अगर काट देता हूँ और मैं इसे ऐसा बना दूं, so how will it look like? E to the power x. Let's find out the expression first. So e to the power x. How will it look like? क्या लगता है? The first e to the power x is e to the power z. मान लो e to the power x को अगर z ले लिया, so it is z to the power k by k factorial, k equal to 0 to infinity. Clear? Next, in the very next line, we put this e to the power x over here. तो ये क्या हो जाएगा? E to the power kx by k factorial. Clear? K equal to 0 to infinity. ठीक है? सिर्फ इंटेंशनली मैंने z की जगह पर वैल्यू डाला है और किसी की जगह पर नहीं. So this is the first part, e to the power this. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? So now e to the power x can be restated as in this way. अभी हर एक के अंदर एक एक करके नया सीरीज बन सकता है. So this is 1 plus 1 by 1 factorial plus summation of x to the power n by n factorial plus 1 by 2 factorial. ये मैंने इसको लिख दिया. This is only this part. And then this part is this summation of 2x whole to the power n by n factorial. Done. Then 1 by 3 factorial summation of 3x whole to the power n by n factorial. And this way it goes till infinity. No problem in this. अब ऐसा लिखने से एक छोटा सा प्रॉब्लम हमारे सामने आता है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n क्या होगा. तो द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इज, ध्यान से देखिए, सो 1 by फैक्टोरियल था, ये तो वैसे ही पहले के लिए रहेगा. एंड दिस इज 1 by n फैक्टोरियल, क्योंकि इसके लिए तो यही इसका कोएफिशिएंट है. दिस n फैक्टोरियल गोज इन एंड दिस इज द फर्स्ट वैल्यू. दूसरे के लिए क्या होगा? 1 by 2 फैक्टोरियल हो गया, ये 1 by n बाहर निकल गया एंड इसका 2 और 2 टू द पावर n होके निकलेगा ना, 2 टू द पावर n by n फैक्टोरियल, दैट इज द सेकंड वैल्यू. थर्ड वैल्यू के लिए क्या होगा? 1/3, 3 निकल गया, 3 टू द पावर n फैक्टोरियल. सो दिस इज द कोएफिशिएंट. इसको फाइनली कैसे लिख सकते हैं? 1 by n फैक्टोरियल सबके लिए कॉमन है, दिस इज द कॉमन पार्ट, r to the power n by r factorial, where r starts from 1 and this goes till infinity. तो कोएफिशिएंट का गेम को बहुत सारी किताबों में मैंने देखा है, इवन इन आरटी शर्मा एंड ऑल, दे हैव आस्क्ड यू टू डू इट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर्स हिसाब से करना होता है. वैसा बिल्कुल भी नहीं करना, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब याद रखिएगा, एनी काइंड ऑफ फाइनाइट सीरीज को अगर हम लोग लेंगे, जैसे मान लेते हैं अगर सीरीज ऐसा होता है 2 4 6 8 डॉट 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 और 1 2 3 4 5 6, तो विच यहाँ पर मैं अगर un नॉर्मल नेचुरल टर्म लेंगे तो ये आएगा 2n और यहाँ आएगा ओनली n. तो कौन किसका सब सीरीज लग रहा है? देखने पर तो लग रहा है ये बड़ा सीरीज है, ये छोटा सीरीज है, बट सीरीज के मामले में एनीथिंग विच इज लेस कोएफिशिएंट्स आर देयर इज कंसीडर्ड इज अ बिगर सीरीज. ठीक है, सो अब ध्यान से देखो, सबसीक्वेंस जितना बड़ा होगा, ये मेरा पर्सनल पैटर्न है, 3n हो गया, और नंबर कम है इसके पास, यस और नो? un इक्वल टू
अब एग्जाम में इतना आसान नहीं देगा, एग्जाम में कैसा देगा, एग्जाम में ऐसा देगा, पता नहीं साइन का नाम क्या है, साइन, ठीक है। और लास्ट में क्या किया, व्हाट्स द लास्ट साइन नेम, ये उल्टा डेल्टा को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। अरे ग्रेडियंट मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इसका नाम ग्रेडियंट कैसे हो गया, लिख लो। तो नाम ही तो पूछ रहा हूँ तुमको, ये जब लिख रहा हूँ इसका नाम क्या है, इन्फिनिटी नाम नहीं है, इसका नाम है लेमिनी स्केट, और इसका एक इक्वेशन भी है, ओके। दिस इज एक्चुअली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टू डायमेंशनल कर्व। ऐसे एक्सिस लेके ग्राफ के क्लास में सिखाया होगा तुम लोग, ठीक है। ओके, तो मान लो अगर ऐसा सिस्टम दिया जाए, तो अगर मैं कोएफिशिएंट्स को ऐसा लेता हूँ, u ऑफ साई 1, u ऑफ साई 2, डॉट 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 u ऑफ साई नैबला, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, देखो इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 1 इज लेस देन 2, तो ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, तो इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू ये है, तो असल में ये सबसे रद्दी भी है। So you need to go for the value which has the least possible value. So if I have it as a 1n, 2n, 3n, ये मैंने बहुत आसानी से समझा. So if I have it as a 3n, 3, 6, 9, 12. So this is also goes like this, but we know that 1 से 12 के बीच में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 ही वैल्यू आ सकते हैं. यहाँ 1 से 12 के बीच में कितना वैल्यू आएगा, 6 वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ पर तो 12 के 12 आ जाएगा. Clear? That's the kind of stuff. अब मान लो इवन को और छोटा करते हैं, 1/2n कर देते हैं, यहाँ तो 24 वैल्यू आ जाए. सी, सो सीक्वेंस के मामले में कौन किसका सबसीक्वेंस है ये निर्धारित होता है कोएफिशिएंट से. सो लेसर द कोएफिशिएंट, हायर द सीक्वेंशियल पैटर्न, यू कैन गो फॉर अ सुपर सीक्वेंस ऑफ दिस. तो मैं कोई भी सीक्वेंस का एक सुपर सीक्वेंस अगर मुझे पैदा करना पड़ा, तो दिस इज द n एंड आई नीड अ सुपर सीक्वेंस, जस्ट पुट इट लाइक n/5. सो दिस टाइम ये इस एरिया में विल इट फॉलो ऑल द वैल्यूज, आंसर है हाँ भाई, सारे वैल्यूज आएंगे. क्यों, 1/5, तुम्हें ऐसे देखने से नहीं लगेगा, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 में पहला वाला वैल्यू आया ऊपर वाला, फिर 10/5 में तो दूसरा वैल्यू आ ही जाएगा. सो 15/5 में भी तीसरा वैल्यू आ गया. सो है ना ये सबसीक्वेंस इसका. ये 5 देखने से ऐसा लगता है, नीचे जब n बाई गामा टू द पावर अल्फा स्क्वायर डाल देंगे तब आपको नहीं लगेगा, क्योंकि गामा टू द पावर अल्फा स्क्वायर का जब मल्टीपल आएगा तब होगा ही. सो थिंक इन दैट वे. कोई भी हाई लेवल मैथमेटिक्स को बच्चों की तरह ही सोचना होता है. सो तब क्या होगा, सो द फर्स्ट वैल्यू इज n बाई गामा, सो फर्स्ट इज n/1, n/2 डॉट 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 n बाई गामा अल्फा स्क्वायर. ठीक है, तो ऐसे ऐसे फिर ऊपर वैल्यू से जाता जाएगा. सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू गेट द फर्स्ट वैल्यू ओवर हियर. Very cool. Just like here we got it, because this value will change हो रहा है. So whenever in that way we reach to this position, that will give you the first one. Okay. So even 1, 2, 3, 4 करते करते ये वैल्यू में भी कभी तो आएगा ना. That's it. You don't need a general term for this. It's just a mere representation of a constant over here. The sum of the series they have asked.
এই এমএসকিউএম এর 23 অবধি আমি সলভ করে দিয়েছিলাম অনলাইনে, তোমরা দেখো। সলিউশনটা পাইনি, কোয়েশ্চেন ছিল, সলিউশনের জন্য টেক্সট করতে বলছিল, মানে সলিউশন লিংকটা ক্লিক করলে হোয়াটসঅ্যাপ খুলছিল ডাইরেক্ট। ठीक है, ओके देख व्हाट विल बी द सम ऑफ दिस सीरीज। देखने से ऐसे तो बच्चा सीरीज लग रहा है, लेकिन है नहीं। इसका जनरल टर्म निकालना थोड़ा मुश्किल है, n क्यूब बाई फैक्टोरियल n x टू द पावर n। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वैल्यू भी तो ऐसा ही होगा ना, सो n क्यूब बाई फैक्टोरियल n, सो फर्स्ट टर्म से डरो मत। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म डैश हियर, एंड देन देयर इज a n क्यूब का फॉर्मूला में हिसाब से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। n, this is 3n n minus 1 plus n minus 1 n minus 2 divided by factorial n x to the power n। समेशन ऑफ n क्यूब का फॉर्मेशन को मैंने लिखा, ठीक है। अब a by b by c को अलग अलग से भी लिख सकते हैं। cn n minus 1 by n factorial, রিফর্মটা ইউজ করলে একটা আছে না n into n plus 1, এক্ষেত্রে আমার লাভ হবে বেশি তাই। Okay, because I need summation with respect to e to the power x and log x and a to the power x type of things. Okay, so I can't take fancy on the other stuff. ये क्या हो जाएगा, n by n minus 1 factorial plus 3, ये क्या दे देगा, x to the power n minus 2 factorial, ये दे देगा x to the power n minus 3 factorial। ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा, यही पर ही खत्म नहीं होगा। So अब सारे इंफिनिटी को मैंने ले लिया है, so you don't need to write that infinity extra। So this is the thing, अब बाहर आएगा, यहाँ से x बाहर आ गया, put that x outside, x to the power। अब ध्यान बूझ के क्यों कर रहे हैं कि ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम, ठीक है। So 3, यहाँ x स्क्वायर निकाल देंगे, x to the power n minus 2 by हो गया n minus 2 factorial, यहाँ क्या निकालेंगे, x cube summation of x minus 3 by n minus 3 factorial, काम खत्म। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट x into this is e to the power x ना, I told you कि शिफ्टिंग किया जा सकता है। अब शिफ्टिंग काम आएगा 1 to infinity, यहाँ पर ले लेंगे क्या 2 to infinity। दो मूवी देख चुका हूँ, अब तीसरा मूवी भी देख लिया, just like that। So this is the thing, 3x square e to the power x, then x cube e to the power x, let's take it common, x 3x square x cube and e to the power x। So this is the answer, इससे और छोटा नहीं किया। अब ऑप्शन के हिसाब से हम लोग कभी कभार वैल्यूज को लेते हैं और कभी कभार इससे पहले तक भी छोड़ सकते हैं। कभी कभार सम्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होता है, समटाइम्स द सम लुक्स लाइक दिस टाइप। एक बार देखने पर कोई सीरीज नजर ही नहीं आता है, ऐसे केस में क्या करेंगे, ठीक है। तो सब कुछ भूल जाओ, इन जैसे करने के लिए सिर्फ ऊपर वाले सीरीज को देखो, नीचे वाला तो है ही पैटर्न में। So just see it like this. Once you see this thing, we observe that the successive difference of the terms are, what is this successive difference? 7, this is 9, 11, this is 15. So this has a plus 4 AP series they are forming. Okay, AP series. So इसका nth term क्या होगा इस series का? Tn of this thing will be an square plus bn plus c.
nth टर्म सीरीज. सो T1 क्या है अपना? A plus B plus C. T2 क्या है अपना? 4A plus 2B plus C. T3 क्या है? 9A plus 3B plus C. ये वाला हो गया 9, ये 16 और ये 27. सॉल्व करने से आ जाएगा A equal to 2, B equal to 1, C equal to 6. That's it. So the nth term follows the structure of 2n square plus n plus 6. Okay. So now summational format में क्या आएगा? यही 2n square plus n plus 6 by factorial n डाल देंगे, हो गया और कुछ नहीं. So 2 by summation of n square by factorial n, then summation of n by factorial n, then 6 summation of 1 by n factorial. So 2e 6e minus 1. ठीक है? 11e minus 6 नहीं plus 6 नहीं 12 या minus 6. इसी पैटर्न से आप लोग एक करेंगे. Wait quickly. इस बार करो. Ah, 25 or 23? 25 मतलब 23 ये 23 है. इस बार भी एपी सीरीज मिल ही जाना चाहिए. जिस तरीके से जैसे मान लो हमारे वक्त में हम लोग टिकट खरीदते थे जब क्रिकेट मैच देखने जाते थे बहुत दिन पहले से. अभी कोई भी टेस्ट मैच का कोई 5वें दिन का टिकट खरीदता ही नहीं है, क्योंकि 5वें दिन तक कोई टेस्ट मैच जाता ही नहीं. सो सम्स को भी वैसे ही पहले 1-2 मिनट में ही खत्म करना है. Sir, is the answer 4e minus 3? कैसे किया भेजो.
Okay, let's see. So even the numerators are into this order. 3, 5, 9, हाँ? और में किस जगह? AP हो गया ये. So TN, NF term. T1, T2, T3 ले लेंगे. T1 आएगा C, A plus B plus C. सॉल्व करते A1, B minus 1, C आ गया 3. So TN आ गया. इसके बाद तो बाकी निकाले. ठीक है. So I'm sending it to you, this PDF. Excuse me, sir. Yes. So in the last problem हम लोग ऊपर 2n minus 1 भी तो लेके कर सकते हैं ना? I mean, I'm just asking, sir. I mean, I don't know. Which one? Yeah, this problem, sir. 3 by 1 factorial, 5 by 2 factorial. जब भी AP series लो 3 coefficients होना जरूरी है. एक constant और 2 variable. Then only you can match up. सीरीज का एक ही चीज है. जैसे मैं 2 और 4 बोल दूं, तीसरा टर्म लेकर नामुमकिन है. There can be infinite possibilities. But it is only possible to certainly say something about a series when you have 3 terms in a series. So that's why the third coefficient A and B and C is required. So that's why the 3 things comes in every time. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Sending you the PDF. Have a look and.